Hello students and welcome back to Balaji online classes. Today I Fezia Kidwai is here to illustrate chapter number 13 electricity and circuits of class 6 science. Now what do you understand by electricity? Electricity is something which is very essential in our life, which plays a very important role in our everyday's life, right? But what actually electricity is? Electricity is basically a flow of electric charge. Electric charge के flow को हम कहते हैं electricity. It is basically a form of energy that is converted from other form of energy like we have coal, we have nuclear power, we have natural gas, etc. This is what electricity is. Also, you all might have seen a torch. You all must have seen a torch, right? A torch, a typical device. टॉर्च जब आप बटन ऑन करते हो तो उसका क्या होता है, उसमें से लाइट लिट अप हो जाती है, राइट? वी ऑल हैव सीन दैट. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट लाइट दैट कम्स फ्रॉम दैट टॉर्च? द सोर्स ऑफ दैट लाइट इज द सेल. दैट सेल जो उसमें डाले जाते हैं. अगर सेल नहीं होंगे, कहते नहीं सेल खत्म हो गया इसलिए टॉर्च नहीं जल रही है, तो टॉर्च कब जलती है? जब आपके उसमें सेल पड़ा होता है, राइट? तो दैट सेल इज बेसिकली द सोर्स ऑफ दैट लाइट दैट इज कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च. तो it is the cell that generates power to the bulb of the torch to glow. Cell is available in many shapes and sizes, which you can see in the below picture. You all can see that cells, there are different types of cells and different sizes, right? Then what are these contents of the electric cell? Electric cell में क्या contents होते हैं? The outermost part of the cell is a cylindrical made of zinc with a moist plate of ammonium chloride. ठीक है? उसके बाद एक सेंटर में एक कार्बन रॉड होता है, ठीक है, जिसका टॉप जो होता है दैट इज सील्ड विद अ मेटालिक कैप. देन कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ ग्रे ग्रैन्युलर पाउडर ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड. कार्बन और मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक ग्रे कलर का ग्रैन्युलर मीन्स खुरदुरा सा, ठीक है, पाउडर होता है जो इसके चारों तरफ होता है. Also, zinc जो होता है that acts as a negative terminal, whereas carbon rod acts as a positive terminal of that cell. Then there is also a chemical that is present in that cell which is called as electrolyte, and this is basically used in the process of generating of electricity. In case if this electrolyte is finished, then the process of generating electricity will stop, and we will say that cell जो है वो खत्म हो गया, right? We need a second cell. Then that torch bulb electric cells a switch and outer body. When switched on, a metal strips moves beneath the switch connecting the cells to the bulb, and then that bulb starts glowing, giving the heat and light. Then we have the electric current. The bulb glows because of the flow of the electric current, which produces heat and light, right? This we have studied. But what do you understand by electric current? Electric current क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली एक में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ इलेक्ट्रिक बल्ब. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज किससे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द मेटल वायर टू द एंड दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल. मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, राइट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेसिकली? Have you understood what electric current is? Basically a part of electrical energy that flows from a positive terminal to a negative terminal. Then we have the electric circuit. Electric circuit basically is a complete passage of electricity from one end to another of the electric cell. The complete electric path where electricity flows through it is called as closed electric circuit, and the arrangement of electric path when electricity does not flow, जब electricity flow नहीं होती है उस path से, then that is called as open electric circuit. Then we can also see a diagram of electric circuit that is given, the pictorial representation of electric circuit you all can see in your book. Then at times it so happens that a bulb does not glow even when the circuit is properly arranged. Then what is the problem? Then at that time we say that the bulb is fused. Bulb is fused, that's why it is not glowing. A bulb is said to be fused when there is a breakage or in the filament. The filament that is present in the bulb is not intact. There is some sort of breakage in that. And that's why the path of the electricity is break and we cannot see any sort of light coming out from that particular object.
Then we have the electrical switch. Electric switch क्या होता है? You all might have seen switches at your home, ठीक है, जो आप यूज करते हो. वही स्विच बोर्ड की बात हो रहा है, नॉर्मल स्विच बोर्ड की. On connecting the wires, the bulb and a cell in a correct order, the bulb starts glowing, right? तो basically किसी भी चीज के, किसी भी अप्लायंस के या किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, उसको स्टॉप या स्टार्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्विच का यूज करते हैं, right? So basically switch is used to start or stop the flow of electricity. When the switch is on, the current is a closed circuit and the bulb glows, and when the switch is on position, off position, the circuit is an open circuit. जब आपका स्विच जो होगा वो ऑन होगा तो सर्किट क्लोज्ड सर्किट की पोजीशन में होगा और बल्ब क्या होगा? वो जलने लगेगा. और जब आप स्विच ऑफ करोगे तो आपका सर्किट जो है वो क्लोज्ड ओपन सर्किट की पोजीशन में आ जाएगा और क्या होगा? आपका जो बल्ब होगा वो जलना बंद हो जाएगा. Then we have these certain components of electric circuit. First is the electric cell. Second is the electric device, like we have electric bulb. Then there is also an electric switch, the purpose of which is to start or stop the flow of electricity. Then we have a connecting wires, जो basically एक path provide करती है to the flow of the current. Then we have electric conductors and electric insulators. ये क्या होते हैं? बेसिकली वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को प्रिवेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास ना होने दें, आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स. दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, एंड दो सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, राइट? और इनके बीच में भी एक होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नीदर दे अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट दे रिस्ट्रिक्ट. Such substances are the mediators and called as semiconductors. ठीक है, जो ना ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं और ना ही पूरी तरह से बहने देते हैं, उसको हम कहते हैं semiconductors, right? So basically we have three kind of substances: conductors, insulators and semiconductors. So class, with this topic your chapter ends here. Now you have to read this chapter properly. You have to mark all the difficult words along with their meanings and spellings. You can also mark your queries and you can discuss that in our next live session. Also, you can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.